हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लाइव स्ट्रीम। तुम्हारा भाई वापस आ गया है न्यू लाइव स्ट्रीम के लिए और पूरा पसीने में तरबतरू। तो पसीने वाली बात को साइड में रखो, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पंखा नहीं चला सकता क्योंकि फिर वॉइस ब्रेक डाउन होगा, और एसी तो है नहीं यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई कितने भी पसीने में हो, कितना भी कुछ भी हो, बट तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। सो कोई दिक्कत नहीं है। अपन कल की जो सीरीज थी उसी को आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो माइक किधर रखना है ना भाई? माइक कहाँ पे आएगा? मेरा माइक कहाँ आएगा? क्योंकि इधर तो कॉपी आएगी ना। चलो माइक, यार मैं गीला हो रहा हूँ ना, इसलिए मैंने माइक लगाया नहीं था, बट हाँ शर्ट पे लगा सकते हैं। तो भाई माइक में अब देखो भाई, आवाज एकदम बढ़िया ही आ रही होगी, आई होप सो। तो स्टार्ट करते हैं ना, बट स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कल वाला वीडियो कहाँ तक के पहुंचे थे अपन। भाई कल लाइट चली गई थी, तुम्हारे भाई को दिक्कत हो गई थी कि लाइट नहीं थी ना। तो फिर उसके आगे क्या करना है, वो अब आधा अधूरा वीडियो मिलेगा भी कि नहीं, मिलेगा भी कि नहीं। ड्रैगन ग्लिम्प्स ग्लिम्प्स हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये बात, हाँ इसी बंदे का वीडियो था वो। विन विन ह जिहान जियांग विन जियांग वीडियोस पे जाओ, पॉपुलर पे जाओ, थिंक फास्टर एंड स्पीक क्लियर। 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ पीपल। हाँ ये वीडियो है भाई। So I'm writing an essay on cats. Cats in art history. I'm an art history major and this be even a little scary. Now, here's what happens when a red speaks to a yellow, a blue, and a green. Have a look at these situations. All right, listen, I don't have that much time. I need to know what is our current return on ad spend and what is our net profit after OPEX. I have to show you the ad before we get to any of that because the ad we filmed was hilarious. You're gonna love it. You know what? I'm not just gonna show you. Guys, come in. Come in, let's all watch the ad together. We're all gonna watch the ad together. We'll laugh together, then we'll learn together, then we'll get to the data that you want. And that's the very important project. Vin, shouldn't we get everyone else's opinion first? No need. I already decided we're doing it. But what if people don't like it? What if people don't like it? Then they'll get over it. That doesn't sound very harmonious. Are you serious? Harmony is great, but results are better. Morning, Pete. Hey, Vin, I heard you went to the zoo on the weekend. Tell me everything. Productive. Oh, okay. Productive. How did the kids enjoy the zoo? Like I said, mission accomplished, animals were seen, snacks were consumed, tantrums neutralized. It was an efficient operation. Right. But did you enjoy it? Like, how did it feel? It felt done, just like this conversation. Do you see the problem? We tend to default to our own communication style, and it works great, but only when you are speaking to people just like you. And everybody else, well, they just tune out, or worse, they judge you wrongfully. Let me share with you how the other colors view you. So here we have Andy. He's my head of marketing, and he's also a red. And filming this B-roll for him is excruciating because he just wants to get back to work and get shit done. So if you're like Andy and you are also a red, you tend to overwhelm others with your fast, direct, outcome-driven style. You know the greens? They see you as someone who's being pretty pushy.
And the yellows, they look at you as being someone who's too serious. And the blues, well, they think you are reckless with details. Now, next on screen, we have a yellow who is me. And this is also the person who came up with the idea for this B-roll. And I love this. Look how much fun I'm having. This is such a great idea, Vin. You're a genius. And if you're a yellow like me, you often lose credibility because of your high energy. Your idea-filled communication style often feels unfocused to reds, chaotic to greens, a little too superficial for the blues who crave detail. Oh, and look on screen. Oh, that's our green. Oh, that's Dan. ग्रीन डिसीजन स्पीड। ओ भाई साहब, मैं ये तो भाई मेरी भी डिसीजन स्पीड बहुत स्लो है। ओ रिस्क टेकिंग तो भाई थोड़ा सा भाई सही है यार। Reliability. Okay, reliability 9 out of 10. Okay. Decision. Speed 2 out of 10. Harmony 10 by 10. थ्री बाई 10 मतलब ले सकता है रिस्क। तो अब मुझे है ना डिसीजन स्पीड बढ़ानी है। डिसीजन स्पीड बढ़ानी है एंड रिस्क टेकिंग को कैलकुलेटिव करके थोड़ा इम्प्रूव करना है। And Dan's our head of ops. And you see, Dan, he didn't want to do this, but he's so non-confrontational. Calm, steady, and the glue that holds the group together. Loves harmony, hates drama, and would rather everyone just get along. भाई ये तो अपन है। Red thinks you are indecisive and too slow to act. Okay. Red. And he just loves to keep the peace. You boring.
फन ओके व्हाट अबाउट हाँ भाई सही बात है भाई ये तो मुझे सब सही लग रहा है ब्लू गेट्स फ्रस्ट्रेटेड ओ माय गॉड frustrated why when you avoid details so मुझे क्या करना पड़ेगा तेज डिसीजन with confidence and gets frustrated when you avoid details TALS वाओ बढ़िया है यार ये तो बहुत सही चीज मिल गई है जो भी अपन डिसीजन लो ना तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ लो तेज डिसीजन ओके with confidence और AILS डिटेल्स के साथ ओके समझ गया भाई अब तो इतना समझ गया that है he's हम doing it. That's क्या why समझे मैं बता देता हूँ तो अभी तक के इनने बोला है कि जो ग्रीन है जो मैं हूँ वो पेशेंस उनका बढ़िया है 10/10 है और रिलायबिलिटी बढ़िया है भाई अपनी रिलायबल तुम कर सकते हो मेरे ऊपर बस डिसीजन स्पीड स्लो है वो मैंने भी भाई है ना वो करी है फील कि मैं डिसीजन बहुत स्लो लेता हूँ मतलब हाँ भाई बनिया हूँ ना थोड़ा सा इसलिए इसके कारण भी हो सकता है हारमनी 10/10 हारमनी का मतलब नहीं पता तुम्हारे भाई को मतलब 10/10 है तो उसको जान के भी क्या ही कर लेंगे रिस्क टेकिंग भाई 3/10 है मतलब हाँ ये भी सही है कि रिस्क मैं ले लेता हूँ बट वो भी धीरे धीरे क्योंकि जब मैं 100% श्योर हो जाता हूँ ना तभी मैं रिस्क ले लेता हूँ सो मेरे को है ना रिस्क 100% श्योर ही होना है बट अगर मैं एक बार डिसीजन मैंने ले लिया है तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई भी करना है ओके
ओके यस, तो अभी तक के इतनी बात समझे. He looks so awkward. I mean, look at him. Let's zoom in a little. Look at him. Look how awkward he looks right now. He does not want to be here. My goodness. Let's zoom in a little further. See how awkward he is? He is so awkward. Now, if you're like Dan, you tend to avoid and resist conflict, which makes you seem indecisive to reds, boring to yellows, who want more excitement, and frustratingly non-committal to blues, who want specifics. Oh, and here we have our beloved Smurf. Yep, that's a blue. Look at him. He is so detailed. He scripted out this entire video, wanted to get everything optimal. But you know what, Pete? I'm going to wing this next part, mate. I'm going to bloody wing the script. I don't even know what I'm going to say right now. That's why I'm going to now just talk for no reason, huh? How do you like that algorithm, Blue, Pete? How do you like that, Pete? What's the algorithm going to do now? Hey? ब्लू भैया है ना भैया एक, तो उनका लिख लेता है BLUE. सो ब्लू है एक्यूरेसी, QRACY 10/10. ओके बढ़िया है, ये सही बात है. प्लानिंग भी सही बात है, PLANING 10, 9/10 भाई बढ़िया. रिस्क टेकिंग, रिस्क तो लेना ही नहीं है यार. रिस्क टेकिंग 2/10 भाई, बहुत ही कम, मतलब लेना ही नहीं है. अटेंशन टू डिटेल, हाँ भाई छोटी छोटी बातों पे 2 कटा के. अटेंशन टू डिटेल 10/10. ओके. स्पॉन्टेनिटी है 3/10. ओके. Red loses patience and sees you are too slow. भाई सही बात है. Red thinks है you are too slow. Yellow feels judged by your criticism. Green thinks you are neat, patchy, and disrupting the peace. Okay, so सही बात है. Let's zoom into Pete. Let's zoom into इनकी his बातों पे nose. ध्यान नहीं देना है. Closer, closer. Look at his nose. Look at that little cute nose. Look at that. Let's zoom out a little bit. Let's zoom out to something else. Let's zoom out to his hands. See, he doesn't even know where to put his hands. He has no idea what he's going to do with his hands. What are you doing with your hands, Pete? Hey, awkward now? You meticulously technical monster. If you're like Pete and you're a blue, sometimes you overcomplicate things in life, like a YouTube video, and you forget to have fun, right? You have such a deep need for precision. I must Wi-Fi ideas, but your own color. You only truly connect with people who are like you and the same color as you. But not everyone is you.
Not everyone is the same color as you. Now, I'm not telling you to change the essence of who you are. I'm telling you that if you want to be a more effective communicator, you need to learn how to adjust your delivery and speak in their communication style so that you can connect better with them. Imagine for a second, walking into work tomorrow and talking to your boss, quickly being able to identify what color he or she is, then adjusting your communication style to connect with them better. What would that mean for you? Does that mean you have to do it with everyone? No, you just do this with the people you truly want to connect with. Let me quickly remind you, when you meet somebody for the first time and you want to identify what color they are, you can ask yourself the same 3 questions I shared earlier. I'll pop them just over here for you too. It's such a cool, powerful little tool that I have on the corner of my computer screen. Any call I get onto, I immediately think of these 3 questions to myself, and I'm able to slightly shift the way I communicate, and it helps me connect with people really fast. You know, I was asked this question at my recent workshop. How do you not judge people? I do. I'm human, okay? But I do it as little as I can. Let's just piggyback off what I just said there. You see, I still do judge others, and I'm human, just like you. But the reason I'm more compassionate is because I now understand that there are 4 different colors. There are 4 different types of human beings in this life, and they speak different languages. And by me understanding that now, more and more, I'm able to be more empathetic, I'm able to be more understanding, and I'm able to judge people less. And you know what's even cooler? I speak all 4 languages now. I can speak red, yellow, green, blue. So that means that when I meet you, regardless of what color you are, I'm going to be able to connect with you more instead of judging you. So now, the final step. How to talk to each color. Think of this as your secret communication hack. Now, when it comes to the reds, make sure you are direct, you're decisive, you're confident, and make sure you use frameworks while you're communicating. They love the frameworks because it'll help you become more clear, concise, and coherent. They respect speed, clarity, and results. So skip the fluff and focus on the outcome. Don't say and results. So skip the fluff and focus on the outcome. Don't say, let me walk you through all the background details before we decide what to do next. I want to show you all 147 slides. Instead, say, listen, the report's finished. All 100, the back, focus on the outcome. Need clarity and results. So skip the fluff and focus on the outcome. Don't say, let me walk you through all the background details before we decide what to do next. I want to show you all 147 slides. Instead, say, listen, the report's finished. I've gone through all the data and summarized for you the top 3 points. And here's what I recommend the next steps be. Let me know if you have any questions. Why is this important? It's important because a lot of leaders in senior positions are really time poor and they love direct communication. And in the example that I just shared with you, I'm using a communication framework. So if you want to learn more about communication frameworks and how to speak in a concise, clear, and coherent manner, I've recorded a free 2-hour training for you where we dive deeper into more frameworks so you can come across more clear and confident. Just click the link in the description to save your spot. Now, when you're talking to a yellow, be enthusiastic, be positive, be engaging. Don't say, let me give you a 5-hour tutorial exactly on aging.
Don't say, let me give you a 5-hour tutorial exactly on how to use this particular camera and then give you a 40-page PDF on how to get the most out of this camera. Instead of that, say, hey, just hit the record button, go have some fun. Go work it out as you go. You're going to love it. Why do this? Well, because they thrive on energy, ideas, and stories. Keep it light, keep it fun, keep it creative. Let them roam free. Leave the details to the blues. Now, when you're talking to a green, be calm, be patient, and supportive. Don't say, we need to make this change. Be patient and supportive. Don't say, we need to make this change right now. Say instead, hey, listen, I know this is a shift, but we'll move at a pace that feels comfortable for you, and I'm going to support you all the way through it. Do you notice the difference when speaking to greens? They value harmony and reliability. So slow down, listen, and avoid pushing too hard, too fast. चैट जीपीटी सीखना है, आ जाओ, सिखा दूंगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में बनाना है, आ जाओ, सिखा दूंगा। एआई टूल सीखना है, आ जाओ बॉस, वो भी सिखा दूंगा। 2 आवर्स की वर्कशॉप में इरिप्लेसेबल बना दूंगा। हाय, माय नेम इज आदित्य कछुए एंड आई एम एन alumni of IIT Kharagpur। कछुआ है। Now, when you're talking to a blue, be precise, structured, and factual. Don't talking to a blue. Be precise, structured, and factual. Be precise. Don't say, don't worry about the details, just trust me. Instead say, here's all the data and here's the step-by-step plan that I've created from the data, and I want to give it to you so you can do a quick double check if you want. Do you notice the subtle change there for the blue? They care about accuracy and process. So come prepared, respect the details, and avoid exaggeration. Oh, they hate that. As you learn how to do this, you'll be able to connect with 95% of the people that you meet. And remember, this doesn't mean you're changing who you are. It means you're just learning how to adapt your communication style to their communication style. Masterful communicators meet people where they are and make the connection effortless. We often hear the phrase, be yourself. And yes, look, that is true to a certain extent. But if you want to truly connect with others, you also have to learn to be dynamic. Like water, you adapt to the shape of the vessel that you're poured into. Be formless, shapeless, like water. See, even Bruce Lee says so. So thanks for that, Uncle. I appreciate that. At the end of the day, see, even Bruce Lee says so. Shapeless. Vessel that you're poured into. Be formless, shapeless, like water. See, even Bruce Lee says so. So thanks for that, Uncle. I appreciate that. At the end of the day, we are all the colors. There's a version of you that's fun and playful, yellow. There's a version of you that seeks connection and depth and detail, blue. There's a version of you that's conflict of. It doesn't mean this is what I room and meet people power. So it lifts all boats with it. Hit this video right here.
Just get to the point. When you want to speak in English fluently, you guys think that this is the method, right? Newspapers karo, endless YouTube videos. I'm going to show you how to answer any high pressure question on the spot without going blank. I'm talking about when your boss puts you on the spot in front of your team, or when a client asks you something you don't know the answer to, or even when you get asked an interview question that catches you off guard. As long as you follow these exact 3 steps in this video, you'll never go blank again. I've tested this process in high stake meetings to stages of up to 10,000 people, and it works. So here's how to do it. The first thing I would do is I would pause to collect my thoughts. And I would give myself as long as of a pause as I need so that I don't start to freak out. The mental block happens when you're trying to come up with an answer in 1 second, in half a second, in a millisecond. That's what causes the panic, the anxiety, which is then going to inevitably lead to a mental blank. Whereas when you pause, take a deep breath. As you pause and take a deep breath, that creates mental clarity. That helps you calm your nervous system down. And in that state, you are much more likely to give yourself the best chance to find a good response. People tend to think that answering a question quickly makes them look good, makes them look smart. When you answer a question really quickly, it doesn't do that. It makes it seem as if you didn't put any thought into the answer. Because if you asked me a question and you said, hey Vin, how do you answer a high pressure situation? Oh, I know how to do that. The first thing you're gonna do is you just gotta pause. And then after you pause, you're gonna use a framework. And then after you use a framework, you can deliver it confidently. Most people just speak when they're just winging things and they think that's gonna help them create a really good career. That's why. No, it doesn't. When you answer a question without taking a moment to think about what the person said, it looks as if you don't care. When you ask me this, if I paused, and then now I answer your question, that's a confident pause. That's a pause of me processing what you're saying, carefully considering what I'm going to say next, and then sharing my thoughts. Now, there's a few key things I want to say here. If you look to the side and you think, and you raise a hand up and you start to think about something like this, or you go into the thinker pose and you start to think, this is a powerful pose to move into because it shows people now I'm processing. Now, that's a good pause. However, if you pause and then you slouch and then you look down and then you're fidgeting with your hands, that's a negative pause because they'll perceive that pause as you being anxious and you not knowing the answer. So there's 2 different types of pauses. One where I'm freaking out and I don't know the answer and you caught me out. One where I'm being really composed and I'm thinking about how to answer this in a way that adds the most value to you. So just notice that within body language cues alone plays a very important part in that. The second thing that I would say is if you pause for a good 2 to 3 seconds and you can't in that moment think about the optimal reply, then be straightforward with the person that's in front of you. Say they asked you a question about marketing, so I'm going to create a mock scenario. Then how should I use marketing, organic marketing, to get more leads for the business that I'm running? मार्केटिंग भाई guys. Emily, I'd love to share with you मार्केटिंग में सबसे पहले तो let me ask you this. Would it be helpful if I met with you later today and I'll give you a comprehensive answer because I've been through content creation for the last 15 years of my life and I want to give you the most meaningful answer. So I want a little bit more time to think on that. Is that okay for me to take a bit more time to think on it and give you the most valuable answer possible later today? Fantastic. I'll set up a time. Why don't we set up a time so I can think about it over lunch and I'll share with you the experience that I have. Something like that is fine. It's totally fine. I think we panic because we think we have to prove ourselves by answering them in the moment, off the cuff, straight away. People don't want a rushed answer. They want an answer that adds the most value to their lives, and people are willing to wait for that. The next thing I'm going to say is that what increases your chances of being able to answer on the spot is I would use a framework. Because when someone asks you, Vin, can you teach us how to create organic content that creates leads? Let's say that's the example. My brain now is freaking out because there is so many different things you can do for content creation that helps generate leads, for example. My brain's going crazy because I'm thinking about all the different things that you can do. Whereas when you use the framework, the one thing, so I'll show you this in action. Someone asks you a question, hey Vin, what's something that I can do when it comes to content creation to get more leads organically?
Listen, the one thing I would say about content creation, whether it's for lead generation or views or building the number of followers, the one thing that I would say is consistency. Consistency is the most important thing. That's the most important strategy that I've discovered as the universal truth. To become better at generating more content and generating more leads, just keep creating content. And as you create content, you'll get better and better and better through consistency, and you'll learn how to get more views, and then you'll learn how to get more leads. But the underlying foundation is consistency. I'm able to deliver that, and I use the sentence, the one thing. Now, the most beautiful thing about this is that I'm not saying that is everything to do with content creation. I'm saying that if there was one thing to focus on, that's what I would focus on. And if you haven't been through a framework class with me, I've put together a free 2-hour crash course where I share 3 powerful communication frameworks to help you in any completely now focused way. So I've talked about consistency, but what you've done there is you've bought yourself time to better answer their question in the most valuable way possible. The third thing you do at the end of you using the framework, the one thing, the third thing you do is you ask a question. And the question you ask right at the end is, once again, depending on the context, is, did you want me to go deeper on that topic? Did you want to get more granular in terms of the strategy? I can look at their facial expressions. If they're smiling and nodding, that's what they're after. And at the end, I check in. Do you want more? Do you want me to go deeper on this? Do you want to go into pragmatic strategies on how to create hooks and bodies and CTAs, call to actions, etc.? Do you want me to do that? And they might say yes, and if they say yes, then you go down deeper in the rabbit hole. The danger in not using frameworks and answering questions on the spot is you end up speaking out your thought process. This is scientifically how your thinking process looks. Yeah, this is a scientific diagram that I'm drawing. And when someone asks you something about content creation and you don't follow a framework, your brain starts to go, oh, of course I can tell you about content creation and doing things organically. You know, the first thing you've got to understand from a foundational level is you've got to be consistent. The second thing I've got to tell you about too is that you've got to write a really good hook. A lot of people have a really good body. And then you're just blah, 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 blah. No matter how valuable what you're saying is, the value is lost in you rambling. So what a framework does, a framework distills your thinking. That's what it does. This distillation process here, that process right here, that's what frameworks do. Because it simply distills your thinking into something that is more concise, more coherent, and it's going to be more credible as you communicate to that point in that concise way. Pause. Once you learn the frameworks, pick a framework, share just one thought about that topic, ask a question, do you want me to go deeper? That's the best way for you to navigate that situation. What would you tell a man who can scroll for hours but can't work for 10 minutes and hates himself for it every night? I'd tell him his brain isn't broken. It's starving for dopamine and grabbing it wherever it can. We start feeding it correctly Monday, March 2. I'm 42, high IQ. Everyone said I'd be successful. Instead, I scroll for hours, start projects I never finish. Do you know the difference between being fluent and being proficient? Most people think they are advanced until they see a C2 level word. In linguistics, we use the CAFR scale. It ranges from A1, which is basic survival English, all the way up to C2, which is mastery level. That's the level of effortless academic fluency. Today, I'm going to give you a complete assessment. There are 6 questions for every single level. That makes it to 36 questions in total. We start easy and it gets harder every minute. I'm sure you're ready for this. Now, this is a video test. If you want the full scientific analysis of your vocabulary size with a certificate, I've linked a comprehensive test in the description below. Open that up in a new tab for later. Not right now. Right now you're here for 36 questions and I want you to count your score, okay? Keep a track of your score. Perhaps get a pen and a paper, count your score out of 36 and mention it in the comments. Please, please do. It's fun. And don't cheat. Don't cheat. Cheating is bad, right? If we want to grow, we want to be honest, right? Let's begin. I want to remind you of my vocabulary course that covers more than 500 words and assessment papers, and there's a lot more. Just in case you're more serious about your vocabulary and want to really enhance it,
Check that course out. It's really good. So we start with section 1, which is level A1, the beginner level. Now, level A1, this is building blocks, okay? Everyday words. Let's start with question number 1. Which word is the opposite of expensive? Heavy, cheap, rich. Cheap. Cheap. Expensive costs a lot. Cheap costs a little. Question number 2. My mother's sister is my aunt, uncle, cousin. My mother's sister is my aunt. Aunt. Aunt is your mother's or your father's sister. Female is aunt, male is uncle. Question number 3. I am very dash. I need a glass of water. Hungry, angry, thirsty. Thirsty. Hungry is for food. Thirsty is for liquids. Okay. Question number 4. Which place do you go to buy books? Library, bookstore, shelf. Library. No, sorry. Which place do you buy books? Bookstore. Bookstore. You borrow from a library. You buy from a bookstore. Remember. Okay. Question number 5. What do you wear on your hands in winter? Socks, gloves, boots. Gloves. This was easy, right? Okay, this is boss question. Question number 6, the last one on the list for A1. Select the correct word. I need to dash my phone battery. Fill, load, charge. 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 We fill a cup, we load a truck, but we charge electronics. I'm pretty sure that most of you got all the answers correct in this level, but section 2 will be slightly better than section 1. Okay, we come to section number 2, which is level A2, the elementary level. Now, level A2 is expanding into travel, description, and routines. All right, question number 7. Which word describes a person with no hair? Blonde, bald, or bold? B-A-L-D. Bald. Bold means brave. Bald means no hair. The spelling is different and the pronunciation is also different. One is bold, the other is bald. Right? Question 8. When you go on a holiday, you pack your clothes in your dash. Luggage. When you go on holiday, you pack your clothes in your package. Storage. Luggage. In your luggage. Luggage, also called baggage. Baggage will also be correct here. Okay. Question number 9. Which verb means to repair something broken? Prepare, fix, repeat. Fix. Fix. To fix means to repair something. And by the way, fix also is used for fixing relationships, fixing dates with somebody, with people. Fix works there too. Okay. Question number 10. The floor is wet. It is very dash. Smooth, slippery, soft. Slippery. Meaning you might fall down. Question number 11. What do you call the list of food at a restaurant? Menu, tariff, bill. Menu. Now this is easy. The bill is what you pay at the end. Tariff is the tax element on the bill. Okay. Question 12, which is the first question of this level. Which word is the odd one out? Okay, that doesn't belong here on the list. Customer, client, colleague. Odd one out, which doesn't belong. Colleague, odd one out. Client, odd one out. Which word is the odd one out? Colleague के लिए होगा भाई. Colleague, customers and clients pay you. A colleague works with you. Okay, till here, it's still a smooth sail, but the waters are going to get muddy and turbulent. Okay, stick around. Section 3, which is level B1, the intermediate level. Level B1 is where we enter the intermediate zone. This is where you can handle most travel and work situations. Let's test your adjectives. Question 13. Which word is a synonym for stubborn? Flexible. Stubborn मतलब जिद्दी. Obstinate. Shy. Flexible तो stubborn नहीं है. Shy भी stubborn नहीं है. Obstinate. Obstinate. Someone who refuses to change their mind. That is obstinate or also called stubborn. Okay, next one, which is question 14. I am dash because I failed my exam. Disappointed, thrilled, challenged. Disappointed. Your study abroad journey begins here. Attend Casey's biggest overseas Disappointed. Sad because expectations were not met. Thrilled means very happy. So of course it doesn't fit here. Question number 15. Which word means to quit a job? Retire, resign, fire. Resign. Resign. Retire is stopping work forever due to age. Okay? Resign is quitting a specific job. Question 16. The police found a clue. They have a dash. Witness, lead, jury. Lead.
Lead. A lead is a piece of information that helps solve a crime. Okay, next one. Which adjective describes uncooked food? Raw, rare, rotten. Which adjective described uncooked food? Raw food. Raw. Rotten means it has gone bad. Raw means it isn't cooked. Next one. This is the boss question. Complete the collocation. I need to dash an appointment with the doctor. Do, make, or take. I need to check. Make. In English, we always make appointments. A pair or group of words that are habitually spoken together is called a collocation. These are pairs like heavy drinker, strong tea, strong coffee. These are all collocations. Moving on to the next one, which is level B2. This is upper intermediate, okay? Business vocabulary or nuance. Level B2 serves business, nuances, or professional language. Right? Are we ready? Question 19. A person who focuses on small, unimportant details and criticizes them unnecessarily is tolerant, nitpicky, A person who focused on small, unimportant details and criticize them unnecessarily. तो ये तो tolerant था नहीं हुआ, flexible भी नहीं हुआ, nitpicky हो गया. Nitpicky. Question 20. Which word is the odd one out? Gaze, stare, glance. Interesting. Which word is the odd one out? Gaze, stare, glance. Interesting. Stare, gaze, glance. Glance. Gaze and stare are long looks. A glance is a very quick look. Okay, that's the difference. Next is question 21. What is a synonym for wealthy? Affluent, destitute, economical. Economic, wealthy ना, economical. Affluent भी हो सकता है, economical तो नहीं. Destitute. Affluent. A formal way to say rich. Destitute means extremely poor. So that's not synonym, that is actually antonym. Next is question 22. Someone who is ambiguous is very ambitious, uses both hands to write, unclear or open to interpretation. Very ambitious. Ambiguous. Someone who is ambiguous. Uses both hands to write, unclear, open interpretation. Unclear. If a statement is ambiguous, it doesn't have a clear single meaning. Oh. Very ambitious, unclear to open interpretation. Person who uses both hands is actually not ambiguous, is ambidextrous. Question 23. An explanation that is based on evidence and logical reasoning is speculative, subjective, rational. Okay. An explanation that is based on evidence and logical reasoning. Rational thinking तो मतलब rational तो subjective मतलब किसी speculative तो नहीं हुआ क्योंकि logic based है और subjective भी नहीं हुआ, rational thinking है मतलब an explanation that is based on evidence and logical. Rational. Okay, this is question 24, the boss question of this level. Which word describes a person who doesn't take sides? Biased, neutral, involved. Neutral. Neutral, also known as impartial. Biased will be opposite of neutral, and involved is just not the right answer here. Now we come to section 5, which is level C1. But I hope you're doing well and you're getting most of these answers right. I'm really excited to see your score. Do not leave without commenting your score. Okay, level C1, which is the advanced level. C1 caters to sophisticated, academic, and specific words. Okay, you have to go very specific on this one. Vague words will not do. Question 25 coming up. Which word is a synonym for worsen? Alleviate, exacerbate, facilitate. Worsen मतलब synonym. Alleviate, exacerbate, facilitate. Facilitate तो नहीं होना चाहिए. Worse है भाई. Exacerbate. B. Exacerbate. To make a bad situation worse. Alleviate means to make it better. So this is opposite of it. Exacerbate. Okay. Medicine can alleviate pain. Question 26. If something is inevitable, it might happen, will definitely happen, won't happen. Inevitable. Might happen. Inevitable. Will definitely happen, won't happen. Inevitable. Inevitable है, might happen. Inevitable. Inevitable मतलब पक्का. Inevitable मतलब नहीं होगा. Might happen.
will definitely happen. It is unavoidable. Okay. Question 27. A dilemma is a difficult choice between two options, a mathematical problem, a disastrous event. Dilemma. Dilemma, a difficult choose between two options. Mathematical problem, dilemma. ना जो trauma हो गया, disastrous event. A difficult choice between two options. A difficult choice. Next one. Choose the word that means brief and to the point. Concise, redundant, prolonged. Choose the word that means brief and to the point. Okay. Conscious, redundant, or prolonged. Choose the word that means brief and on to the point. Redundant. Conscious तो हो गया ना like redundant or prolonged. I think prolonged. Yeah, concise. Using a few words to express a lot. That is concise. We all want to be concise because it's a good trait to have. Concise तो होता है भाई. Let's go now, it's time to get busy. Next is question 29. The lawyer tried to dash the severity of the crime. Instigate, The lawyer tried to dash the severity of the crime. Investigate. mitigate. Mitigate, to make something less severe or painful. Remember, he's a lawyer, right? That's what he would do. Mitigate, okay? Make something less severe, less painful. Question 30, the last one, the first question of this level. Which word describes a person who shows no emotion, no interest or concern? Meticulous. Which word describes a person who shows no emotion, no interest, or no concern? Meticulous. Reckless. Apathetic. Apathetic. Reckless is careless. Apathetic means you don't care. Meticulous is someone who shows great attention to detail. Okay. Reckless and apathetic, you might get confused between these two, but if you look at it, there's a difference between reckless and apathetic. Reckless is somebody who's in general reckless, careless. Okay. But apathetic is someone who doesn't care for a specific something. Okay. That is apathetic. And meticulous, on the other hand, is completely different. It's great attention to detail. Okay. All right. Coming to section 6, the most advanced level, the mastery level. I hope you really enjoy this one. This is going to be a slightly harder one. And this is native level mastery. Even some native speakers get this wrong. We're looking for a word that describes something very specific. Okay. Are we ready? Yes, we are. Question 31. What does ephemeral mean? Lasting a very short time, ancient and old, extremely heavy. Ephemeral, extremely heavy, ephemeral. This is ephemeral, lasting a very short time. Accident, ancient and old. This is very ephemeral. This is very old. This is very ancient. Now, extremely heavy, lasting a very short time. Lasting a very short time. Fleeting also is a good word. Fleeting, ephemeral, something that lasts very short time. Next one, question 32. If someone is obsequious, they are overly obedient or... If someone is obsequious, they are submissive, overly obedient, fat, rude and loud. Obsessious, rude and loud. Obsessious, rude overly and loud. Obedient. This is a great word to learn. Please learn it with me, and pronunciation is slightly on the harder side, but you'll get it. Even I got it with some difficulty, but I did get it. It's obsequious. Okay, obsequious. Overly obedient. Somebody who listens to everything. Obsequious, very overly obedient and submissive. Obsequious. Like a servant who tries too hard to please. Okay. Next is question 33. What does cacophony mean? A harsh mixture of sounds, a beautiful melody, a state of confusion. Cacophony. A harsh mixture of sounds. Cacophony. A beautiful melody. A state of confusion. Cacophony. A beautiful melody लग रहा है मुझे तो. A harsh mixture of sounds, cacophony. Okay, it is a certain type of noise where too many people are talking and nobody can be heard. That is cacophony. You often see it on television shows, right? And then you sometimes see it on news, media. Question 34. Which word means to lessen the anger of someone? Mollify, agitate, castigate. To lessen the anger of someone, mollify,
मतलब भड़काना, एगिटेट मतलब कैस्टिकेट, एलिगेट, एगिटेट और कैस्टिकेट, एगिटेट। Mollify, also similar to placate. अच्छा, Please learn it. Really good word. Mollify. मॉडिफाई तो मैंने पढ़ाना ही बोला था ना, टू लेसन द एंगर ऑफ समवन। लेसन मॉडिफाई क्या हो गया भाई? मॉडिफाई मतलब कम करना हो गया क्या? Mollify, also similar to placate. Please learn it. Really good word. Mollify, placate. Question 35. Something that is esoteric is understood by only a few people, related to the stars, very clearly written. Understood by only few people. Esoteric. Understood by only a few. Specialized knowledge we're talking about. Example, esoteric debates, like for a book that is written in an esoteric style This that only video few is people very understand. esoteric. Okay, something that is difficult, hard for a specific audience, that is esoteric. Okay, question 36, the final Not last for question. me, not Complete the for- sentence with the word meaning only lazy for or children. avoiding work. He was an dash employee who never finished his task. Indolent, insolent, indigent. Indigent. Indolent. He was an indolent employee who never finished his Indolent. task. Insolent means rude. Okay, somebody, you call it batamiz in Hindi. That is insolent. Okay, indigent means poor. Indolent is the C2 word for lazy. अच्छा, indigent lazy मतलब he was a lazy employee who never finished his task. ये भी तो हो गया। All right, somebody who in Hindi, employee who never finished his task. Insolent means rude. Okay, somebody, you call it batamiz in Hindi. That is insolent. Okay, indigent means poor. Indolent is the C2 word for lazy. All right, somebody who doesn't want to work, avoids to work. Now, here's something interesting for you. Please do not skip this section. In the description of this video, there is an assessment line for you. Please don't miss it for the world. Go and take that test and it will give you further understanding of your vocabulary. Okay, and of course, I have to remind you about my vocab course. It's really good. I have handwritten. सो गाइस भाई, आज की लाइव में मुझे मजा आया बहुत ज्यादा। और कल कौन सा वीडियो देखना है भाई, वो भी पता कर लेते हैं भाई। Allow this term. How to communicate with others. How to communicate with others. Ba 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 ba. Faster when you're being put on the spot. You see, when someone asks you a question and you're not prepared, what happens? Your brain hits the panic button, you open a dozen browser tabs in your head, trying to scramble for what to say. Secret techniques. और भाई क्या हालचाल? बढ़िया, आप बताओ। और काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, मतलब सही। ऐसे लोगों की बातें सुनकर नॉर्मल लगता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी बातें हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना जाती है, जिनसे बार बार मिलने का मन करता है, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ऐसी 10 ये वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे प्रूवन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को किसी अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे। ये 7 स्ट्रेटेजीज ना, तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे प्रूवन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को किसी अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे। ये 7 स्ट्रेटेजीज ना आपने पहले कभी सुने होगी और ना ही आपको कोई ये बताएगा, बट इन्हें यूज करने से ना सिर्फ आप किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, बट आप अपने थॉट्स को भी क्लैरिटी के साथ सामने वाले को प्रेजेंट कर पाओगे। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ हो कि आप बहुत कुछ बोल लेते हो, लेकिन आपके दोस्त को आपकी कही गई बात पल्ले नहीं पड़ती, या फिर वो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो आपके थॉट्स को कन्वे करने के लिए, वो काफी ज्यादा गलत हो रहा है। और ना यार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आता है, फिर वो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस में हो, या फिर पब्लिक स्पीकिंग क्यों ना हो। तो इन 7 पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सामने वाली की बातें ज्यादा एक्टिवली सुनते हो, तब ये छोटी सी चीज ये डेमोंस्ट्रेट करती है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी कई गई बातों की वैल्यू करते हो और आप उनका पर्सपेक्टिव जानने में इंटरेस्ट रखते हो। आपको कभी भी वो इंसान नहीं बनना है जो किसी को कभी कुछ बोलने नहीं देता। फ्रैंकली आपको कह रहा हूं, ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है जो सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है। बट ये एक्टिव लिसनिंग किया कैसे जाए? देखो, सबसे पहली चीज, आपका पूरा अटेंशन लगेगा जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो। थोड़ी भी देर के लिए आप बैक ऑफ द माइंड जाके कुछ भी सोच नहीं सकते। आपको उस मोमेंट में, उस कन्वर्सेशन में अपना 100% देना और प्रेजेंट में रहना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। पॉइंट नंबर 2, आपको एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे हेल्दी कह रहा हूं क्योंकि आपको उसे घूरना नहीं है, बीच बीच में आप कहीं भी इधर देख सकते हो, लेकिन ट्राई टू मेंटेन दैट आई कांटेक्ट। पॉइंट नंबर 3, सामने वाला अगर कुछ बात कर रहा है तो उसकी बातों को काटो मत। अरे भाई, तुम्हारा जवाब बताने से पहले उसकी बात कंप्लीट तो होने दो। ये गलती आज की डेट पे हमसे जाने अनजाने हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। बट सामने वाले को बात करने देने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला वाला, उस बंदे को अच्छा लगेगा कि आप उसकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हो और उन्हें पूरी तरह सुन रहे हो। और दूसरा वाला थोड़ा मैनिपुलेटिव है,
लेकिन सुन लो, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो उसके हिडन इंटेंशन सामने आ जाते हैं। तो अगली बार से किसी भी कन्वर्सेशन में ट्राई करना कि तुम खुद कम बातें करो और सामने वाले को ज्यादा बातें करने दो। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग एक्टिव लिसनिंग के टाइम पे करते हैं वो ये कि हम लोग सामने वाले की बातें रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। मतलब उसपे हमें कुछ ना कुछ ओपिनियन देना ही होता है या फिर अपना एक व्यू पॉइंट रखना ही होता है। तो भाई सामने वाले की बातें सुनो, उसके मैसेज और उसके फीलिंग्स जानने के लिए। तुम्हें हर जगह अपना व्यू पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो ऐसे सोच रहा था, भाई यू करना है तो ये सब। बट अगर ये कन्वर्सेशन और एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक छिड़ गया है तो एक इंसिडेंट ऐसा बता रहा हूं जो आपके साथ भी हुआ होगा। कभी बात करते वक्त कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हारा मजाक उड़ाओ। ये छोटी सी चीज ना आपके कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख देती है। इसी वजह से कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इमोशनल होकर रिस्पॉन्स देने से या फिर कोई अटपटी बात कहने से बचाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार होता था, लेकिन इसके सॉल्यूशन के बारे में मुझे जानने मिला कुकू एफएम के ऑडियो शो इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स में। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूं और मैंने नोटिस किया कि आप में से भी लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। भाई सच बता रहा हूं, ये जान के काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक्स नहीं सुनी है तो कुकू एफएम अब आपके लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल लेके आया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो। इसमें 5000 प्लस शो शामिल है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखो भाई ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेंबर्स को बताना मत भूलना। और हां, ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्द से जल्द अवेल जरूर करना। और आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ऑडियो शो सुनो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब समझते हैं अगली टेक्निक को। टेक्निक नंबर 2, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। बहुत बार ना बात करते वक्त जब भी आप अपने वर्ड्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तब सामने वाला या तो आपकी कही गई बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है या फिर उसमें कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। तो इसी वजह से बात करते वक्त थोड़े सिंपल वर्ड्स यूज करो। ये आजकल के जेन ज़ी स्लैंग्स हो सकता है ज्यादा लोगों को समझ में ना आए और हो सकता है अगर आप टेक्निकल साइड में बिलोंग करते हो तो कुछ टेक्निकल टर्म्स नॉन टेक्निकल लोगों को समझ में ना आए। तो सबसे पहली बात अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो। अब इस प्रोसेस में भले आपको 2-3 सेकंड का टाइम लगे तो ले लो। अब वो लोग भी इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए और कुछ गलत ना बोले। हल्का सा पॉज दो, पहले प्रोसेस करो उन चीजों को और फिर अपना आंसर दो। और कोई बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर देने से अच्छा उसे छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो और किसी अच्छे से एग्जांपल के साथ आपकी बात को एक्सप्लेन कर देना। ये बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, लेकिन जब तक आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखने वाले। सिर्फ ये वीडियो को देखने से आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखोगे, उसके लिए आपको इन सारे टिप्स और टेक्निक्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके बिना मैं सिर्फ अपनी बातें वेस्ट कर रहा हूं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इन सारे टिप्स को अगर आप सुन रहे हो तो इन्हें नोट डाउन जरूर करना और इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना। पॉइंट नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब लोगों को लगता है कि सिर्फ बात करने से ही हम किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट वो लोग ये चीज कंप्लीटली भूल गए कि मॉडर्न लैंग्वेज सिर्फ 20000 ईयर्स पहले ही डेवलप हुई है। वेराज हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट पे 3 लाख साल से भी पहले से है। तो ये जो बीच का बहुत बड़ा मेजर चंक था टाइम का, तब हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? तब तो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। यू गॉट इट राइट, हम लोग कम्युनिकेट करते थे बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर से। इतने लंबे टाइम से आप इसे यूज कर रहे थे ना कि वो आपके बैक ऑफ द माइंड अभी फील हो चुका है। आप कभी भी किसी को अपनी गर्दन नीचे की और अपने सिर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रहा है, इसका मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? ये सारी क्लियर इंडिकेशन है कि आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाते हो। बस इन्हीं सारी छोटी-छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, उसकी वोकल टोन कैसे चेंज हो रही है, उसके बाद उसके हैंड गेस्चर्स कैसे, उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीजें आपको सबकॉन्शियसली बहुत सारी हिडन व्यूज दे जाएगी। और अगर आपको बॉडी लैंग्वेज में डिटेल वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो समझ गए, लेकिन खुद की बॉडी लैंग्वेज का क्या? तो सबसे पहली बात, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और इनवाइटिंग रखनी है, यानी हाथ को ऐसे फोल्ड करके मत बैठना। उसके बाद जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी वोकल टोन आपको आपके मैसेज से मैच करनी है। यानी अगर कोई दर्द वाली बात कह रहे हो तो थोड़ा दर्द के साथ कहो, कोई खुशी वाली बात है तो थोड़ा हैप्पीली कहो, और अगर कोई एक्साइटिंग बात है तो उसकी बात ही कुछ और है। ये जो अभी आपने मॉड्यूलेशन देखा मेरे वॉइस में वो आपको सीखना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आपको सेम डायलॉग 2 अलग-अलग टोन्स में बोल के दिखाता हूं, आपको तुरंत डिफरेंस दिख जाएगा। भाई फाइनली मेरी नौकरी लग गई यार, आज मां बहुत ज्यादा खुश थी। भाई मेरी नौकरी लग गई यार, आज मां बहुत ज्यादा खुश थी। इन दोनों लाइंस में आपने डिफरेंस नोटिस किया? कितना ज्यादा डिफरेंस था। एक चीज आपको फील हुई और दूसरी चीज पूरी ऐसी प्लेन निकल गई। ये वोकल टोनिंग सीख लेना बहुत ही सिंपल सी चीज है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब अगर आप दिन भर में इतने सारे लोगों के साथ मिल रहे हो तो हो सकता है कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आपकी आर्गुमेंट हो जाए, लेकिन अब इस आर्गुमेंट से डील कैसे करना है? ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि भाई कम्युनिकेशन करना आता है, बात अच्छे से करनी आती है, लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट हो जाए तो तब हम लोग क्या करें हमें पता ही नहीं है। तो इस चीज को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। अब अगर कभी किसी से आपकी आर्गुमेंट हो जाए तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है सामने वाले की बात को पूरा सुन के लेना। अब देखो जब सामने वाला बात कर रहा है तो हो सकता है उसमें से 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे निकल के आए जिसे आप आर्गुमेंट में वापस यूज कर सकते हो, लेकिन इन्हें कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना है। थोड़ा रुको, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाओ और फिर आर्ग्यू करो। फॉर एग्जांपल अगर सामने वाला आपसे कभी आके कह रहा है कि भाई तूने मेरे साथ ये बहुत गलत किया यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली सामने वाले से लड़ाई झगड़ा शुरू कर नहीं सकते। तो अगर कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप अटके हो या फिर किसी आर्गुमेंट में अटके हो तो सबसे बेस्ट पार्ट आप कर सकते हो वो है उसे डायल डाउन करना। भाई सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने का ट्राई करो, उसे बढ़ाओ मत। आपका जवाब वहां पे ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है यार गलती हो गई मुझसे, इंसान हूं मैं भी, लेकिन तू क्या मेरी बात सुन के लगा कि ये गलती मेरे से क्यों हुई, क्या ऐसी सिचुएशन मुझ पे आई थी जिसकी वजह से मैंने ये किया। तो जब भी आप ये सिंपल सी छोटी सी चीज करते हो कि ठीक है भाई मान लिया तो बड़ा आदमी था भाई, हम लोग ही छोटे थे, हम लोगों ने गलती की, तो भाई ये सिंपल सी टैक्टिक ना आपको किसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम से भी बचा सकती है। देखो सामने वाले का गुस्सा कब तक रहता है जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपने कोई सच में गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो, निकल लो यार, अपना टाइम वेस्ट मत करो उस आर्गुमेंट में, ना आपको कुछ मिलने वाला है ना उस इंसान को। और अगर तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट्स रहेंगे उसे साबित करने के लिए। ऐसे मोमेंट्स पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव चीज फेंक के मारो और उसके बाद अपने वैलिड पॉइंट्स फेंक के मारना, वो काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। इस चीज को आप विल्मोट और हॉकर के 2011 के रिसर्च पेपर में भी पढ़ सकते हो जिसका टाइटल है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन लोगों ने, तो सोचा आपको भी बता दूं, जिसको भी इंटरेस्ट रहेगा पॉज करके पढ़ लेना। तो अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ जिसे कहा जाता है सैंडविच टेक्निक। तो देखो यार ये टेक्निक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक अलग एक्सपेरिमेंट और हॉकर के 2011 के उसे साबित करने के लिए। ऐसे मोमेंट्स पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन लोगों ने, तो सोचा आपको भी बता दूं, जिसको भी Okay, stages of conflict, different goals, compassion, blame and defensiveness, issue expansion, abandoned dialogue, hospitality, settlement of negotiation, settlement, peace building. ओके ये बढ़िया लगा मुझे भाई, किसे बहस क्यों करना है, ये टाइमलाइन है TIME लाइन। ओके टाइमलाइन है ये, तो इसमें बीच में
रहेगा, पॉज करके पढ़ लेना। तो आप बढ़ते अगली टेक्निक की तरफ जिसे कहा जाता है सैंडविच टेक्निक। तो देखो यार, ये टेक्निक ना बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स का एक पार्ट है। इस टेक्निक को आप तब यूज कर सकते हो जब भी आपको किसी को कुछ फीडबैक देना है या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है और आप चाहते हो कि सामने वाले को उस चीज का बुरा भी ना लगे। इस चीज में ना बेसिकली सैंडविचिंग का यूज होता है, यानी ऊपर और नीचे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा और बीच में हमारा नेगेटिव लेयर। तो सबसे पहले आपको सामने वाले की किसी अच्छी बात, किसी अच्छी चीज को पेश करना है, उसके बाद जो भी आपको क्रिटिसिज्म करना है या फिर फीडबैक देना है वो आप दे सकते हो और फिर लास्ट में आप वापस और एक बार पॉजिटिव चीज कहकर सामने वाले को एनकरेज कर सकते हो या फिर रिपोर्ट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा सिंपल टेक्निक है, आपको एक एग्जांपल के साथ इजीली समझ आएगी। रोहन, तुमने इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क दिखाया है, उसमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में एक चीज नोटिस की कि तुम्हारा अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा तगड़ा है। बस मुझे इसमें लगता है कि जो चीज हम लोग और ज्यादा बेटर कर सकते हैं वो है इसके कंटेंट को थोड़ा इंपैक्टफुल बनाना। बस मुझे यहाँ पे छोटी सी चीज की इंप्रूवमेंट लगी और वो है कि इस कंटेंट को हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी तो यार मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से कर लेगा और टाइम पे सबमिट कर देगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज की, नेगेटिव फीडबैक को दो पॉजिटिव वे से सैंडविच कर दिया, हो गया आपका काम। पीपल मैनेजिंग स्किल्स इसे ही तो कहा जाता है। आप सामने वाले से काम निकलवा लो और उसे बुरा भी ना लगे। अब बढ़ते हैं हमारी 6 टेक्निक पे, व्हिच इज PAR, प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट टेक्निक। अब ये टेक्निक ना सिचुएशन क्वेश्चन पे सबसे अच्छे से काम करती है। यानी अगर मुझे कभी भी किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी पड़े तो मैं इस टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकता हूं। अब इसमें सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपने चैलेंज को डिस्क्राइब करते हो, उसके बाद डिटेल में आपने जो एक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे बताते हो, लास्ट में आप अपना रिजल्ट या फिर आउटकम बताते हो। आप कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम इस पोजीशन के लिए सही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी के लिए सही हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना हार्ड वर्क कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका जवाब ऐसे हो सकता है जहाँ पे आप सबसे पहले प्रॉब्लम बताते हो। इसे मुझे याद है मेरी लास्ट कंपनी में भी ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 15 घंटों तक काम करते थे। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब बात आती है एक्शन की। अब उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सी पॉलिसी निकाली। पहले मैं ऑफिस से काफी ज्यादा दूर रहता था तो मुझे घर जाने के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे लग जाते थे। जब से ओवर टाइम होने लगा तब मैंने ऑफिस के काफी ज्यादा पास में शिफ्ट कर लिया ताकि मेरा वो 2 घंटे एक्स्ट्रा मैं अपने ऑफिस में दे पाऊं। ये था आपका एक्शन। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं वर्कलोड के साथ या फिर ओवर टाइम करने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूं क्योंकि मुझे इसकी आदत है। ये था आपका रिजल्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। अब इस टेक्निक में आप सामने वाले को बेसिकली ऐसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो कि वो उसके थॉट्स को, उसके बिहेवियर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करे। ये टेक्निक ना बेसिकली बहुत सारे सेल्स वाले लोग यूज करते हैं। इसमें बेसिकली लोग इंफॉर्मेशन को किसी ऐसे वे में फ्रेम करेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि वो आपके बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इसमें बेसिकली आपको फीचर से ज्यादा बेनिफिट्स बताने हैं। हमेशा पूरा टाइम आपको एक पॉजिटिव टोन यूज करनी है और आपको ना सामने वाले की इमोशंस, उसकी वैल्यूज को अपील करना है। अगर आप नहीं समझे तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे प्रोडक्ट का 95% सक्सेस रेट है, आप इसे कुछ इस तरह फ्रेम कर सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट ने 95% लोगों को उनका गोल अचीव करने के लिए हेल्प की है। यहाँ पे आपने बेसिकली सामने वाले के बेनिफिट्स को अपील किया, उसके इंटरेस्ट को टारगेट किया। इन सारी टेक्निक्स को अगर आप रियल लाइफ में यूज करने लगोगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। और एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसे बस रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से लास्ट में और एक बार आपको याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये ऑडियो शो जरूर सुनना। इस ऑडियो शो में जितने Do you know only 10% of Indians can speak English? So if you can speak fluent English, you can set yourself हार्वी स्पेक्टर, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, इन सब में कॉमन चीज क्या है? वो जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं एवरीबॉडी नोटिसेस देम एंड एवरीबॉडी लाइक्स देम। अगर आप भी एक इंट्रोवर्ट हो, उनके जैसा कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे सोशल सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिसे यूज करके आप इंस्टेंटली लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप जहां भी जाओ लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपसे जुड़ा हुआ एक पॉजिटिव ऑरा लोगों को आपकी तरफ खींचता लेके आएगा। और इसमें मैं आपको कोई फेक इंसान बनना, पीपल प्लीजिंग या फिर मैनिपुलेशन नहीं सिखाने वाला, बट बहुत सारी सिंपल सी चीजें बताऊंगा जो आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं बिल्ड कर पाते हो तो बहुत ही नेचुरली आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर लोगों को आपसे वो पॉजिटिव वाइब मिल रही है तो आपको कोई स्किल आए ना आए आपको एक अपर एज मिल जाती है कि भाई हां बंदे की पर्सनैलिटी तो तगड़ी है। मैं जो ये पर्सनैलिटी वाली बात कर रहा हूं उसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कंसीडर करो एक कंपनी में 2 लोग काम करते हैं। पहला रोहन है जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, अकेला अकेला बैठा रहता है और दूसरा राहुल है जो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और सबसे जाके बात करता है। रोहन बात नहीं करता लेकिन उसे काम काफी अच्छे से आता है और वहीं पर राहुल काफी ज्यादा एवरेज काम करता है लेकिन सबसे हंस खेल के बातें करता है। अब आप मुझे बताओ कि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो सबसे जल्दी प्रमोशन किसको मिलेगा? ऑब्वियसली बात है राहुल को, क्योंकि वो अपनी टीम में सबसे बात करता है, अपने मैनेजर से क्लोज, अपनी बॉस की नजरों में आता रहता है और कितना भी ना कह लो लेकिन रियल लाइफ में भी यही होता है। अच्छे काम करने वाले लोग बहुत बार नोटिस में नहीं आते। आपने भी नोटिस किया है कि जब भी आप नर्वस फील करते हो तब आपको लगता है कि सब लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि आप हर कन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग इनपुट दो, उस चक्कर में आप अपने दिमाग पे कुछ ज्यादा जोर देते हो और उल्टा
उल्टी गिनती करो 5 4 3 2 1 और बस अपने आप को उस चीज में उस कन्वर्सेशन में झोंक दो। डोंट थिंक पहली बार जब भी आप किसी से मिल रहे हो तभी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर्स। चाहे आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो या फिर किसी आ देती है, उल्टा तुम लोगों में इनसिक्योरिटी डेवलप कर देते हो। इस बार सामने वाला सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बस यही एक सिंपल सी ट्रिक होती है खुद में डोमिनेंस और सुपीरियरिटी लाने की। याद रखना ये सारी चीजें आपको पहली बार जब भी आप किसी से मिल रहे हो तभी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर्स। चाहे आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो या फिर किसी इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हो, आप कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे लिए कुछ नहीं है तो रिमेन साइलेंट। टेल यू साइलेंस ना लोगों को अनकंफर्टेबल बना देती है, उल्टा तुम लोगों में इनसिक्योरिटी डेवलप कर देते हो। इस बार सामने वाला सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बस यही एक सिंपल सी ट्रिक होती है खुद में डोमिनेंस और सुपीरियरिटी लाने की। याद रखना ये सारी चीजें आपको पहली बार जब भी आप किसी से मिल रहे हो तभी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर्स। चाहे आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो या फिर The trick here is to care less. 5 सेकंड रूल फॉलो करो। किसी भी चीज को करने से पहले बस उल्टी गिनती करो 5 4 3 2 1 और बस अपने आप को उस चीज में उस कन्वर्सेशन में झोंक दो। डोंट थिंक अबाउट लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। उसके बाद अपने दिमाग में ओवरथिंकिंग करने से अच्छा प्रेजेंट में जीना सीखो। सामने वाले की बातों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। एक्टिवली उसकी बातें सुनो, जस्ट टू लिसन टू इट एंड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू इट। जब भी आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो रिमेन साइलेंट। आई टेल यू साइलेंस ना लोगों को अनकंफर्टेबल बना देती है, उल्टा तुम लोगों में इनसिक्योरिटी डेवलप कर देते हो। इस बार सामने वाला सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। बस यही एक सिंपल सी ट्रिक होती है खुद में डोमिनेंस और सुपीरियरिटी लाने की। याद रखना ये सारी चीजें आपको पहली बार जब भी मैं आपकी तरफ ट्रस्ट और कंफर्ट की फीलिंग जगा देता है। लेकिन वैभव भाई ये स्ट्रांग आई कांटेक्ट कैसे बना के रखें? नंबर 1 कीप योर आईज काम एंड रिलैक्स्ड। इसके लिए सिंपल सा रूल है जिसे कहा नंबर 2 आई कांटेक्ट। कहा जाता है आपकी आंखें बिना बोले बहुत कुछ बोल देती है। एक स्ट्रांग आई कांटेक्ट सामने वाले में आपकी तरफ ट्रस्ट और कंफर्ट की फीलिंग जगा देता है। लेकिन वैभव भाई ये स्ट्रांग आई कांटेक्ट कैसे बना के रखें? नंबर 1 कीप योर आईज काम एंड रिलैक्स्ड। इसके लिए सिंपल सा रूल है जिसे कहा जाता है 80-20% रूल। आपको 80% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट बना के रखना है और बस 20% इधर-उधर ग्लैंस करना है। और जब भी आप बात कर रहे हो तो होल्ड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली उनके सामने रख सकते हो और उनका टेंशन पूरा ग्रास्प करके रखना है और बस 20% इधर-उधर ग्लैंस करना है। और जब भी आप बात कर काम एंड रिलैक्स्ड। इसके लिए सिंपल सा रूल है जिसे कहा जाता है 80-20% रूल। आपको 80% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट बना के रखना है और बस 20% इधर-उधर ग्लैंस करना है। और जब भी आप बात कर रहे हो तो होल्ड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जिससे आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली उनके सामने रख सकते हो और उनका टेंशन पूरा ग्रास्प कर सकते हो। और जब भी आप सामने वाले की बातें सुन रहे हो तो आई कांटेक्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए, सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि आप उनकी बातें समझ के प्रोसेस कर रहे हो। एक और सिंपल सी चीज आप कर सकते हो, दैट इज स्माइलिंग विद योर आईज। जब भी आप अपनी आंखों से हंसते हो तो एक ऑथेंटिक इंसान दिखते हो, जो जेन्युइनली सामने वाले के लिए खुश है, जिसकी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली वाइब है। आप लोगों को नेचुरली अप्रोचेबल लगते हो। उनको लगता है कि कोई मेरी बात सुने ना सुने ये इंसान जरूर मेरी बात सुनेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज चिवलरी। कभी किसी को सीट ऑफर करना, कभी किसी की हेल्प करना, प्लीज एक्सक्यूज मी, थैंक यू जैसे ग्रेटिट्यूड भरे वर्ड्स यूज करना, या फिर कभी किसी को ऐसे रैंडमली कॉम्प्लीमेंट दे देना। ये कुछ ऐसे काफी सिंपल सी चीज है जो आपके अराउंड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। आप कॉन्फिडेंट के साथ साथ एक पोलाइट, हम्बल और रिस्पेक्टफुल इंसान नजर आते हो। इट शोज दैट यू आर कंसिडरेट अबाउट अदर्स। जब भी आप दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराते हो तब नेचुरली उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और वो भी वापस उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, उसे भी ट्राई करके देखना। ऑलवेज से देयर नेम इन द कन्वर्सेशन। यू हर्ड मी राइट। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है। वैभव ये काम कैसे करें? वैभव कैसा है? बहुत दिनों से दिखा नहीं। जब भी आप लोगों को किसी इंटरेक्शन में उनके नाम से बार-बार एड्रेस करते हो तब उन्हें एक ईज और कंफर्ट मिलता है। आप काफी ज्यादा सटल तरीके से ये शोकेस करते हो कि यू केयर अबाउट देम। इसे नोट डाउन कर लेना और रेगुलर प्रैक्टिस में से ट्राई जरूर करके देखना। पॉइंट नंबर 4 हैंडल इंसल्ट स्मूथली। अगर आपको कभी कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर इंसल्ट करता है और आप इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हो और गुस्सा कर देते हो तो ये दिख के आता है कि आप उसके कमेंट की वजह से इनसिक्योर हो गए हो और ये देख के सामने वाले को आपका वीक पॉइंट नजर आ जाता है। अगली बार इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आपको ये दिखाना है कि आपको उसके कमेंट से फर्क नहीं पड़ता। स्टे काम एंड मेंटेन योर कंपोजर और उस कमेंट को पर्सनली ना लेकर उल्टा रिस्पॉन्ड विद ह्यूमर और वहां पे अपने मूड को इंस्टेंटली लाइटन कर दो। ये छोटी सी एक्शन ये साबित कर देगी कि आप खुद के साथ काफी ज्यादा सिक्योर फील करते हो और दुनिया में कोई भी इंसान आपको इजीली प्रोवोक नहीं कर सकता। और टू बी ऑनेस्ट सबको ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट लगती है। पॉइंट नंबर 5 लिसन मोर एंड टॉक लेस। कुछ लोगों को आदत होती है हर कन्वर्सेशन को घूम फिर के अपने ऊपर लाने की। आपका भी कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होगा। इन लोगों को खुद के बारे में इतनी बात करने की आदत होती है कि सामने वाला कुछ कह रहा है उनको नजर नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कोई भी उनके प्रॉब्लम्स बता रहा है तो दे वांट यू टू ओनली लिसन एंड नॉट रिस्पॉन्ड। वो ये नहीं चाहता कि आप उन पे कमेंट दो या फिर अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर दो। स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंस्टेड एक्टिवली उनकी बातें सुन के जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करो। दूसरों के लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव जानो, वो लाइफ को कैसे दिखते हैं वो समझो। आप जो हमेशा ऐसे सीरियस सोचते हो ना आपको थोड़ा सा एक वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा हर एक चीज का। बी सेल्फ इन्वेस्टेड एंड वर्क ऑन योर गोल्स। जब आप खुद पे काम कर रहे हो तब चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपका फोकस कभी भी किसी डिस्ट्रैक्शन से नहीं लेगा और उस मोमेंट पे आप एक डिटरमिनेशन और कॉन्फिडेंस शोकेस करते हो कि आपके लिए आप खुद सबसे ऊपर हो और उस डिसिप्लिन को कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता। ऐसे इंसान में इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई होती है जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस और अपने गोल्स को बैलेंस कर पाता है। यू बिकम अ पर्सन हु इज पैशनेट अबाउट थिंग्स और यही चीज लोगों में आपके लिए क्यूरियोसिटी और एडमायरेशन पैदा करता है। प्लस आपको पॉजिटिव बन जाता है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज दिखती आती है कि ये इंसान किसी भी चैलेंज को बहुत ज्यादा ग्रेसफुली हैंडल करता है। ये इंसान नेगेटिव चीजों को एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ऑप्टिमिज्म में बदल देता है और दूसरे लोगों को भी उसके जैसा बनने में इंस्पायर करता है। आप एग्जांपल के लिए शाहरुख खान को देख लो, जब भी वो किसी इंटरव्यू में बात करते हैं तो उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आता है। I'm honestly, ऐसा बोल दो I'm the last of the stars. 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 नाउ आप ये चीज समझ लो कि ये कोई एरोगेंस नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आई एम द बेस्ट एट व्हाटएवर आई डू। मुझे ना दूसरों से फर्क नहीं पड़ता एंड दैट इज द डिफरेंस इन बीइंग असर्टिव एंड एग्रेसिव। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। लास्ट में आपको वापस एक बार याद दिला दूं, बुक ऑफ में जाके हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक आज की आज जरूर सुनना। लोगों से बात कैसे करनी है, उनसे मिलना कैसे, उनसे इंटरैक्ट कैसे करना है, इस पूरे साइकोलॉजी के खेल के इस बुक में कई सारे रूल्स दिए गए हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। कुछ चीजें भी गलत भी बोल रहा है, I can teach you code in Python. कुछ चीजें हवाबाजी भी कर रहा है। सही है, मतलब ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए ही इतनी ज्यादा पूरे हैं बिकॉज आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी स्पीच भी कुछ खास। तो वो बंदे की बात सही लगी है। मतलब ये स्पेशल था क्या भाई? ओके कोई बात नहीं। तो मुझे वो बंदे की बात सही लगी है जो बोल रहा था, जो इंग्लिश में बातें कर रहा था। अंग्रेज जो था, अंग्रेज एशियन अंग्रेज जो था। तो बात कुल मिला के ये है कि भाई 4 टाइप्स ऑफ पीपल होता है, रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। सो अगर कोई भाई बंदा बिजनेस की बातें कर रहा है तो उसके साथ अपन को भी है ना थोड़ा जो है मीनिंगफुल बातें करनी पड़ेगी। जो बंदा लॉजिकल बातें कर रहा है कि भाई धरती ऐसे घूमती है तो हाँ भाई धरती ऐसे ही घूमती है, धरती मैंने कल घूमते हुए देखी थी, मतलब लॉजिकल बात। मैं चांद पे गया था भाई, लॉजिक में मतलब समझा करो। और मेरा ओ सॉरी भाई साहब, माइक उधर पड़ा हुआ है। ओ शिट, ओ भाई साहब, मैं वही बोलूं आवाज इतनी कम क्यों है यार। सो भाई इतनी दूर से आवाज कैसी आ रही होगी यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है बस।
Good night, good night, good night. आज भाई मजा आ गया भाई, कल की स्ट्रीम में भी है ना सब ये सब